तो कुछ मेंटल एक्सरसाइजेस, कुछ मेडिटेशन, प्राणायाम्स, डू यू सजेस्ट एनीथिंग? Stop taking stress. A good meditation, seeking help of a therapist is very important. But हमारे साथ उल्टा है, हमें लगता है ये हो गया फटाफट दवाई की तरफ भागो, जबकि नहीं होना चाहिए. Shape doesn't matter. No, because everybody is different. So Yeah. your partner would have different needs, you would have different needs. So it's okay if you have different fantasies levels or if you don't feel like it, but don't block yourself. कुछ स्पेशल एक्सरसाइजेज आप कर सकते हो जिससे आपकी परफॉर्मेंस, सेक्सुअल परफॉर्मेंस बहुत इंप्रूव होती है. एक्सरसाइजेज लाइक स्क्वाट्स, बटरफ्लाइज, एक्सरसाइजेज जो. And I also recommend every woman who is above 25, they are working, they cannot take care of themselves, start multivitamins. Don't ignore it. एक माँ अपनी बेटी को हर तरीके का ज्ञान देती है बट सेक्स एजुकेशन नहीं देती. सेक्स तो बोलना नहीं चाहता आपसे, खा के एजुकेशन दोगे आप? हाँ. कैसे बोल लेती है तू? Anybody can follow in their hectic lifestyle. Like you are a busy person, I am a busy person. A lot of listeners who are listening to us, नहीं होगा उनके पास टाइम बहुत कुछ करने का, बट एक चीज़ जो वो कर लें तो उनकी सेक्सुअल लाइफ बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो सकती है. सो आप अपने पेशेंट्स को कुछ सजेस्ट करते हो जब वो इस तरह के इश्यूज़ लेकर आपके पास आते हैं? तो कुछ मेंटल एक्सरसाइजेज, कुछ मेडिटेशन, प्राणायाम्स, डू यू सजेस्ट एनीथिंग टू मी? See, there are 3 things I want to tell on this topic. First is, you should be open to have sexual pleasures. If you block and you feel I'm not deserving or I shouldn't do it or it will be very painful or I think I'm not born for it or now I had kid, I don't need it, or now I have family, I don't need it. Stop blocking yourself because it's a natural desire. It will keep on coming and going. So go it with the flow if you have a good partner, okay? Secondly, most of the women develop PCOS and PCODs and all other lifestyle issues which are not medical, they are lifestyle problems. So they happens just because your cycles are irregular and the biggest reason what the stress levels. So PCOS and PCODs के लिए भी बोला दवाई है, okay, it is there, but it is not a cure. This is just a way to, along with the medication, you have to develop a good lifestyle and you'll able to get out of it. So stop taking stress. A good meditation, seeking help of a therapist is very important. But हमारे साथ उल्टा है, हमें लगता है ये हो गया फटाफट दवाई की तरफ भागो, जबकि नहीं होना चाहिए. With your home-based syrups and this ginger water, you'll able to work lot on your emotions, lot on your hormone levels. तो इस पे काम करना ज़रूरी है. Third, if you want your sexual life to be nice, start releasing. Don't keep it inside you. The women are not expressive. उन्हें लगता है मेरी आंखें पढ़ के समझ जाए. Let him, है ना? Let him understand through my, like बोलते हैं ना, read between the lines. So start releasing yourself because your performance is all based on how comfortable you are with your partner. So express yourself. बहुत ज़्यादा important है. But yes, being physically active, doing it with your partner, obviously being physically available, Right. then accepting your body the way you are. Don't develop the body negativity. I don't look good, I shouldn't do it, or maybe I have my flaps when I do this position. Mat socho. Correct. If you are happy, if you are healthy, if you are invested, definitely everything will go hand in hand. Shape doesn't matter. No, because everybody is different. So Yeah. your partner would have different needs, you would have different needs. So it's okay if you have different fantasies levels or if you don't feel like it, but don't block yourself. नहीं मन है, नहीं है तो talk it out. That doesn't make you bad or dirty or let's say irreceptive or maybe slut on bed. It's okay because he is the one who has to fulfill it. So asking him will only help. ठीक है. So lifestyle, yes, a healthy lifestyle is good for performance everywhere. कुछ स्पेशल एक्सरसाइजेज आप कर सकते हो जिससे आपकी परफॉर्मेंस, सेक्सुअल परफॉर्मेंस बहुत इंप्रूव होती है. एक्सरसाइजेज लाइक स्क्वाट्स, बटरफ्लाइज, कीगल एक्सरसाइजेज जो आपके पेल्विक फ्लोर मसल्स को स्ट्रेंथन करती हैं. अगर आप कार्डियो करते हो तो उससे आपका स्टैमिना इंप्रूव होता है. योगा, स्ट्रेचिंग करते हो तो उससे आप ज़्यादा फ्लेक्सिबल होते हो. सो ऑल दीज एक्सरसाइजेज विल डेफिनेटली हेल्प यू. द फिटर यू आर, लाइक अगेन फिटर पे यहाँ पे बात बॉडी अपीयरेंस का नहीं है, अपीयरेंस का नहीं है, आपके वेट का या आपके उन सब चीज़ों का नहीं है. इट इज़ अबाउट हाउ फिट यू फील. Yes. Whether you're flexible or not, whether your cardio health is good or not, स्टैमिना तभी अच्छा होगा. तो इस तरह की सारी एक्सरसाइजेस करते हो. एंड देन कमिंग टू डाइट में भी कुछ स्पेशल चीज़ें फॉर विमेन. आई थिंक हेल्दी फैट्स, ओमेगा 3 और जो बेसिक आपको मिनरल्स लेने चाहिए, मैग्नीशियम लेना चाहिए, जिंक, आयरन, इस तरह की रिच डाइट अगर लेते हैं तो वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी, सपोर्ट करेगी
आपके सेक्सुअल परफॉर्मेंस में भी Definitely. And taking iron rich foods are very, very important because every month you have to go through lots of iron loss from your body. So don't ignore it. When you get even pregnant, the folic acid, iron tablets, calciums are very important. And I also recommend every woman who is above 25, they are working, they cannot take care of themselves, start multivitamins. Don't ignore it. है ना? Don't, very important. Don't ignore it कि हाय ये तो चोचलेबाजी है. नहीं, it is Supplements important. के टैग में घबराओ मत, मल्टीविटामिन से बहुत ज्यादा जरूरी है. ये सारे विटामिन्स आप अपने फूड से नहीं ले पा रहे हो, चाहते हुए भी नहीं ले पा रहे हो. Trust any brand which you feel connected to and Exactly. start your multivitamins. Exactly. Go to a doctor and ask which multivitamin works for me, but take it. I know sometimes they smell very fishy, but You taste just have them. to take it with water. Smell तो करना ही क्यों है? Just take it, gulp it with water. I take it. I'm sure you also take it. And we have to see, our mothers started taking when they are 40 50s, but now we have to. So it's recommend those who are not taking multivitamins, it's very efficient. सस्ते सस्ता आता है, महंगे से महंगा आता है, जो आपको सूट करता है वो ले लो, लेकिन लो. Right, absolutely. And even probiotics are very important Yes, for vaginal for gut health. health, yeah. So वो सब चीजें include करो. And then yeah, there are some herbs also like maca and ginseng. Yes. जो women health के लिए बहुत ही अच्छा रोल प्ले करते हैं. However, मैं यहाँ पर एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगी कि हर लड़की के लिए हर हर्ब नहीं होता नहीं है. है. तो आप अपना होमवर्क करो हर हर्ब के बारे में. हर्ब्स फॉर विमेन सेक्सुअल हेल्थ टाइप करो, सर्च पेपर्स पढ़ो, ट्राई करो. इफ इट वर्क्स फॉर यू देन गो अहेड विद इट. बट Definitely. दीज थिंग्स हेल्प. ऑल दीज नेचुरल थिंग्स डेफिनेटली हेल्प्स. Definitely. And rather than seeking some of the any herb which is not available in your city, your state, your country, because every city and state have a different temperature, environment and everything. Right. Start taking warm food, start taking homemade food, you will get everything that you need. Yeah. जितना प्रोसेस्ड फूड से दूर रहोगे उतना better help कर आपकी पाएगा. हेल्थ अच्छी होगी. एब्सोल्युटली. नेहा, वी टॉक्ड अबाउट कम्युनिकेशन बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ और पार्टनर्स, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड और पीपल हु आर जस्ट इनटू कैजुअल सेक्स. व्हाट अबाउट टॉकिंग इट विद योर पेरेंट्स बिफोर इवन यू गेट इनटू इट? अपनी शादी से पहले एक माँ अपनी बेटी को किस तरह की नॉलेज दे सकती है या किस तरह से वो कम्युनिकेट कर सकती है सो दैट हर डॉटर हैज़ अ ग्रेट सेक्सुअल लाइफ आफ्टर मैरिज? मुझे लगता है ये भी चीज़ है जो इंडिया में बिल्कुल नहीं होती. एक माँ अपनी बेटी को हर तरीके का ज्ञान देती है बट सेक्स एजुकेशन नहीं देती. वेयर एज एक माँ को कितने सालों का एक्सपीरियंस है, अगर वो अच्छे से बिठाए, समझाए, बात करे तो कितना ईजी हो जाएगा वो बेटी के लिए भी जिसकी शादी हो रही है एंड शी इज़ गोइंग टू एक्सप्लोर a new different world. So we have discussed like a lot of habits, but one sexual habit which anybody can follow in their hectic lifestyle, like you are a busy person, I am a busy person, a lot of listeners who are listening to us, नहीं होगा उनके पास टाइम बहुत कुछ करने का, बट एक चीज़ जो वो कर लें तो उनकी सेक्सुअल लाइफ बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो सकती है. Hygiene, right, which is very important. Then definitely making boundaries, how much you have to do it and when to do it, whenever you feel like. Third, don't take pressure of being into sexual life a lot. If you like it, go. Otherwise, keep it at a bay. So, I want you to keep a good sexual health control, कि मैं अपनी लाइफ के लिए खुद रिस्पॉन्सिबल हूँ और मुझे इसका ध्यान रखना है. So, I want you to start doing little efforts for it. Like your hygiene is an effort. एकदम से वो establish नहीं होने वाला है. तो उसके लिए थोड़ा सा ध्यान देना ज़रूरी है. अपने लिए बोलना ज़रूरी है when you don't like it. ठीक है? So pretty much what all we discussed today, yes. वो सारी चीज़ें करते हैं. तो यही आज का एजेंडा था, टॉपिक था, and I think we really helped people to understand better about their sexual health, sexual performance, and to have better time with their partners. And thank you so much, Neha, for all your time and all that you shared with us today. It was great. Thank you so much for having me, and I hope that we reach to lots of females out here. Yes. And if they have any questions, they are free to post us so that we could reply them and give them the reliable source of information so that it could reach them. Absolutely. So if you have any questions, if you still have any questions, please feel free to drop them in the comments below.